to talk to you. Hello, dear. Where are you? What's your name? गुड क्या नाम है मॉर्निंग आपका? हिंदी शमानाज। में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। शमानाज। शमानाज। शमा, जी, आप कहाँ रहती हैं? Where do you live? गांव में रहती हूँ मैं। गांव का धमौल। नाम होगा? क्या नाम है गांव धमौल। का? धमौली। धमौल धमौल। धमौल। धमाल सर। धमौल। या जी। Give me the कहाँ? location a little bit. जरा लोकेशन दीजिए। अरवल डिस्ट्रिक्ट। हाँ। अच्छा, और ज्यादा बेहतर तरीके से दीजिए, और जरा बेहतर तरीके से दीजिए। कोरठा थाना हुआ, पोस्ट इब्राहिमपुर। हाँ। यही हमारे घर का एड्रेस है। हाँ। अभी क्या कर है जहाना। अभी क्या कर क्या है? हम ग्रेजुएशन करके बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सुपर, बहुत बढ़िया। और किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है पढ़ाई के अलावा? मतलब हम चाहते हैं इंग्लिश टॉकिंग सीखना, तो हम लोग दो बहाने, एक निखत आपसे बात हुई है ना, निखत की। तो निखत आपसे बड़ी वो है कि निखत? जी, हमसे बड़ी हैं वो। वो आपसे बड़ी हैं? हमसे बात हुई जी मेरी। हाँ, आपसे बात हुई है, तो हम लोग चाह रहे हैं ना कि मतलब वो ज्वाइन करे तो साथ में हम भी पढ़ लेता है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो सकता है। एक नहीं हो एक फी सकता। एक फी पे, एक पेशेंट के फी पे दो पेशेंट नहीं दिखा सकते। डॉक्टर को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखा सकते। नहीं, मैं आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर दूंगा, लेकिन सर, ये चीज फैमिली से हैं सर, सही नहीं। इसीलिए हम हाँ। लोग। हाँ, मैं करूंगा, मैं कुछ करूंगा। फैजान है तो बिल्कुल कुछ करूंगा। ये चीज नहीं करूंगा, क्योंकि लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए कुछ करूंगा डेफिनेटली। ओके। क्योंकि पुअर ये फैमिली है, कुछ तो सपोर्ट कीजिए। हाँ, लड़की ऑफ जाते हैं, वो भी कोर्स। गाँव से हैं। आप सोचिए कि आपको गाँव से हर हाल फिर में भी मैं पढ़ाऊंगा। हॉस्टल। मैं बगैर फी के भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन ना लें। वो पॉइंट नहीं है मेरा। पॉइंट खाली वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है मुझे कि एक स्टूडेंट के फी में दो को पढ़ाना। दैट एज ए पॉलिसी आई वोंट एक्सेप्ट। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है यार। मैं जब चाहूँ किसी के स्टूडेंट का फी पूरा छोड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जी हाँ, सर। सर्टेन पॉलिसीज आई विल नॉट चेंज। ओके, सो आई क्योंकि विल डेफिनेटली फाइनेंशियल टेक। कंडीशन हमारी अच्छी नहीं है, तो सेल्फ स्टडी से ही हम बीपीएससी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मुझे कहीं कोई कोचिंग नहीं परेशानी करते नहीं हैं। होगी आपकी मदद करने में, ठीक है? मुझे कोई जी। परेशानी नहीं होगी आपकी मदद करने में। आई एम थैंक एब्सोल्युटली ओके हेल्पिंग यू गाइस एंड मेकिंग सम प्रोविजंस फॉर योर फॉर डिस्काउंट इन योर फी एज वेल। डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। और आप लोग को बस थैंक यू। याद रखना होगा, दोनों, हालांकि निखत से बात हुई है मेरी। आपसे जी एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? शमा, शमा बताया ना जी आपने? जी जी। शमा, आप मुझे बताएं कि मैं स्कूल जाती हूँ और मैं स्कूल जा रही हूँ, ये दोनों एक ही बात है या अलग बात है? ये तो स्कूल में जाती हूँ, तो ये तो हो गया मैं स्कूल प्रेजेंट जाती हूँ, टेंस। मैं स्कूल जा रही हूँ। नहीं, टेंस नहीं जानना मुझे। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। मैंने खाली ये पूछा कि दोनों एक ही बात है या अलग बातें हैं। मैं स्कूल जाती नहीं, हूँ, ये मैं स्कूल जा रही हूँ, दोनों एक ही बात है या अलग बातें हैं? इंग्लिश मेरा वीक है सर, जीरो है, हम तो बताते इंग्लिश की हैं बात आपको। नहीं कर रहा मेरी मेरी बहन, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ, दोनों हिंदी है। ये दोनों हिंदी एक ही हिंदी, एक जैसी हिंदी है, या दोनों में फर्क है? दोनों के मतलब में, इन दोनों सेंटेंसेस के मतलब में फर्क है क्या? ये पूछ रहा हूँ। एक एक हुआ जा रहे हैं, मतलब कि अभी स्टार्टिंग क्या, एक जाती हूँ, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। थैंक यू वेरी मच। तो क्या इसको बोलते समय इंग्लिश में भी फर्क होगा? बिल्कुल होगा। बहुत बढ़िया, बस इतना ही जानना था। तो प्लीज सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे पढ़ा दीजिएगा ना। श्योर मुझे बहुत श्योर, शौक। बिल्कुल आप पढ़ेंगी। 100%। एक ओके, नो प्रॉब्लम। बच्ची को पढ़ा दीजिएगा तो आपका बहुत कुछ ही भला होगा। एक एक हाँ सर, आपको कोई ऐसे मत आपको बोलो। बोलने की जरूरत नहीं। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, हो गई बात। हो यार जाएगा। गाँव से इसे लगता है फीस। कोई नहीं, हम बहुत पहले से बोल दिए सर। अभी हम बीमार हैं, इसीलिए आए हैं यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए। ओह, ओके ओके। आई होप यू आर गेटिंग बेटर। आप बेहतर हो रही हैं? जी, दवा चल रही है। गुड। वी विल होप दैट you get better as soon as possible, and soon we will start an online class. Okay? ठीक, ओके, जी। थैंक यू। All right. Hmm. So she's in Ranchi, in your house for the treatment.
Faizan? Yes. Yes. I see. I see. Okay. So yeah, the view wasn't worth the climb. The course, unhappy people because पैसा इतना खर्चा के कोई फायदा नहीं. So the course was not worth the fee. The course was not worth the fee. All right. Suppose you went to a Golgappa stall and you ate expensive Golgappas because that stall is very famous. Okay. Normally people sell 5 Golgappas for 10 rupees. He sells only 2 or 3 Golgappas for 10 rupees. You went there, you ate Golgappas and he said, हाँ यार, पैसा लिया लेकिन खान taste बहुत जबरदस्त था. You're happy with the end result. You're happy with the taste of the Golgappas. You don't mind paying 10 rupees for 2 Golgappas, extra money. So you will say, yeah, they're expensive. They are expensive, but they are worth the price. They are worth the extra money. It means you have no problems paying extra. Another situation. You heard about a stall, oh, their Golgappas are very tasty. You went there. They're also expensive, okay? 10 rupees, only 2, 3 Golgappa. You put one Golgappa in your mouth and you say, yeah, it's not special, it's just normal. Or even worse. Nah, they're not worth the extra money. These Golgappas are not worth the extra money you are paying. Now, there are some students. There is a student called Sahil. Okay. He missed the passive voice tense in the pre-intermediate course. There is a chapter, unit 10, where we talk about the passive voice. He missed it and he had confusions. So I said to him, okay, I will give you 10 minutes outside the class, 15 minutes, half an hour, and you will have no confusion left. Because he's a hardworking student. I had faith in him. He was worth the extra time. He was worth the extra time that I gave him. Now, sometimes some students, I'm not talking about myself because I don't do this with anybody. Whoever wants extra time, I give them extra time. Okay. But sometimes some teachers think, "Arey, ye ladkwa seekhega nahi, this boy will not learn. He's not worth extra time." मतलब आप उसको समय मत दीजिए, extra बेकार है, waste है. Okay. But I knew about Sahil. Sahil is absolutely worth the extra time. I spent 15 minutes with him and he has no confusion now in his mind about what I taught. So worth is an adjective. अगर गौर से देख लीजिए, the view wasn't worth the climb. Worth is not a verb. अगर worth verb होता तो वहां wasn't की जगह didn't होता, right? Didn't laugh, didn't go, didn't see, है ना? Didn't worth. Lekin worth is not a verb. Worth is an adjective. So the view wasn't worth the climb. You are not worth my time. I don't want to argue with you. I don't want to argue with you because you are not worth my time. पता चला इससे? Worth my time. Yeah, you are not worth my time. I will not argue with you. So if something A is worth B, okay, then B is the investment, A is the result. And the result is according to the investment. You're happy with the result. A is worth B. But if you're not happy with the result of the investment, A is not worth B. When I say A is worth B, then what is the result and what is the investment, guys? A is worth B. A is the investment or B is the investment? Not getting the A is idea? the investment. Can A is you the investment. repeat? Yes, sir. Faizan? Can you repeat the situation, sir? A is worth B. Then what is the investment and what is the result? A is the result, sir, Very well and B done. is the investment. Exactly. If you look at the sentence Apurva and Zeba,
The view wasn't worth the climb. Tell me, what is the investment? View or climb? What is the investment? Climb. Climb, sir. Climb. Climb. So investment comes after worth, okay? And the result Oh. is the subject. Don't say okay, say oh yeah, oh yeah. Apurva, don't say Oh, okay. Don't say oh okay. yes, sir. Okay means now you have heard it for the first time. Oh yeah means yeah, you told us, but I didn't notice. Now I noticed. Yeah, you're right. Yes, sir. Okay, sir, is a Yes, very sir. lame response in this kind of situation. If I tell you something for the first time, then you say, okay, sir. All right. If I tell you Yes, something sir, the you are second right. time, you might say, okay, sir. But if you have been told something twice, three times, and you still got it wrong, and then I corrected you, then you don't say, okay, sir. You say, oh, yeah. Why? Because now your mind is working. Yeah. So the reaction should be accordingly. So, okay and oh, yeah, there are two different reactions. The second reaction shows that your mind has noticed something. Okay, sir means you listen to me. Okay, sir. Oh, yeah, it means you are noticing something. So I hope you're noticing. The view wasn't worth the climb. The course isn't worth the fee. You are not worth my time. Here, my time is the investment. I don't want to invest my time in you. You're not worth my time. You say this to somebody. कभी कभी कहता है अरे तुमसे बात करने का कोई फायदा है, तुमसे बहस करने का कोई फायदा है, तुम में हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. You are not worth my time. I will not waste my time in you or on you. Okay. Let's continue. One more example. So you met this girl or boy at college, okay, and you really liked him or her, and you felt you were in love totally, you know. So you approach the person and you propose to him or her, but the person rejects you, says not interested in you. Then you wait and wait and wait and wait and wait. And again, after some time, you try. The person rejects you again, but you still do not lose hope. You wait and wait and wait, and finally you approach her or him again. And this time the person says yes. All right. Now you're married and you're having this conversation. So he or she asks you, I rejected you 2 times, but you still did not, have a relationship with anybody else. You still waited for me. Why? Why did you still wait for me? I mean, I had said no 2 times. So then you say, yeah, I know you said 2 times no to me, but I knew you were worth the wait. You were worth the What? wait. Okay. You were worth the wait. I knew you were the only one for me. So you were worth the wait. Okay. So I hope you understand the structure, how we use it. A is worth Yes, sir. B. Now it's A is clear. not worth B. Okay. Go walk slowly. You'll know that this is what happens with you. Clumsy people. Put it down. Yeah. Okay, now. The way you explain, sir, that is very easy to understand, sir. Yeah, I know. That's what I like about my job, because I understood it that way too, Apurva. For me, English was a foreign language. It didn't make sense to me when I was young. Okay, but then I learned these phrases. I understood them that way, and I try to explain them the same way to other people here.
Okay. Sir, you are worth for weight. ना for कहाँ है? For है यहाँ पे. Worth for the climb. Can you see worth for the climb? You are worth the climb, right? No, What's the weight? And my you are worth the weight. the weight. Okay, sir. You are worth the weight. Suppose you bought something, you bought a product, and you're very happy with the product. Very happy. Although it was a bit expensive. It was a bit expensive, but you have no regrets. You are very happy that you bought it. You say it is worth It's every worth. It is rupiah. worth. Every rupiah I It is spent on it. worth the cost. It is worth every rupiah I have spent on it. Right? It is worth every single rupiah I have spent on it. जो जो एक रुपया जो हम खर्च किए हैं इस चीज पे एकदम सही है, कोई regrets नहीं. It is worth every rupiah that I have spent on it. Hmm. So the view wasn't worth the climb. Oh dear, said the happy man. Oh dear, said the happy man. I think you are very ill. The happy man said, I think you are very ill. You need to see the best psychiatrist in the world. You need to see the best psychiatrist in the world. You need to see the best psychiatrist in the world. His name is Dr. Greenbaum. You need to see the best psychiatrist in the world. His name is Greenbaum, Dr. Greenbaum. He is the only man who can help you. I am Dr. Greenbaum, replied the man sadly. Then, sir, who will That's very strange, sir. help him, sir? I am Dr. Greenbaum. How would you say this in Hindi? I am Dr. Greenbaum. अपूर्वा, देखते हैं इस बार तुम्हारा कैसा चलता है इमेजिनेशन. चलो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी. हम ही ना वो डॉक्टर हैं. Very well done, Apurva. Very well done. Very well done. I am Dr. Greenbaum. So we achieved that feeling just by stressing the word am. Am को stress करके अपूर्वा हमने वो वाली feeling ले ली जो आपने अभी sentence बोला हिंदी में उसको Yes, sir. feel देने के लिए am को stress किया हो गया. I am Dr. Greenbaum. हम ही तो हैं Dr. Greenbaum. I am Dr. Greenbaum. डोंट वरी, जब शुरू से करेंगे ना पूर्वा हम लोग कोर्स तो आपको ये सब की खूब प्रैक्टिस मिलेगी बेटा. Okay, sir. And I am working on it, sir. You say, please speak very slowly and think what you say, and I work on it, sir. Okay, yep, you are working on it. Great, and I'm happy you will make. And Sir, I'm sure. Apurva will join your another intermediate class or the No. basic. She knows a lot of English. She needs just practice. So she needs to be in the elementary. Her English is too good, but the only problem is with her speaking. So I want to make things easy for her. You know, I made her life difficult already, very difficult by putting her in the wrong class. She needs just practice of speaking, and she will get that practice in the elementary level better. You know, how to form those simple sentences orally. If when she writes, Faizan, you won't believe the way she writes. You know, she writes so beautifully. Her English is so good and standard when she writes. You don't get to see her 10% of her knowledge when she speaks. That's all I can tell you. Okay. She doesn't even translate 10% of her knowledge into speaking. And that's very interesting. I will tell you, I have never taught a student like Apurva before. It means, sir, she is going to join
Pre-intermediate class. She's going to stay in the elementary, my new elementary batch. I want to give her practice with her simple sentences, because she has problems only when she speaks, not when she writes. And in the pre-intermediate course, again, it will be too difficult again, because I want to give her most basic practice. But I will also put her in the pre-intermediate for some days. If she feels comfortable there, like she was already in the pre-intermediate class, but she did not feel comfortable there. I understand. I Okay. respect my students' feelings, how they feel. एक और लड़का है अपूर्वा रवि, okay? वो प्री इंटरमीडिएट में नहीं रहना चाहता था अपूर्वा. He didn't want to stay there. Sir, please put me in the elementary. Sir, please put me in the elementary. I said, no, I'm not gonna put you in the elementary. You know why? Because Sir, Ravi was is, being late. is he continuing the class, sir? No, not that Ravi, another Ravi. Okay. Apurva, hold on, Apurva. I will listen to your question, but first of all, let me finish what I'm saying. Ravi, Okay. your fiance's brother, your future brother-in-law, you know, he was, sir, put me in the elementary class, sir. Elementary class is good for me. Why are you putting me in the pre-intermediate? I will do it later. I said, stay there. Stay there. This guy was just lazy. He found bigger challenge in the pre-intermediate, so he wanted to be in the elementary because elementary में उसको बोलना आसान लग रहा था. मैंने कहा चुपचाप से वहां जो डॉक्टर डिसाइड करता है ना क्या सही रहेगा. हालांकि कई बार हमसे गलती होती है, जैसे अपूर्वा के मामले में आई मेड मिस्टेक बिकॉज आई काइंड ऑफ looked at her written English and decided on that basis. That was my fault. Her written English is very good. Very few students can write the way Purva does in my class. Very few. She writes beautifully. Okay. So, yeah, that was the case. Now, coming back to Apurva, your question, what did you ask me? Is he continuing the class, sir? Who? Ravi? Yes, sir. He's a little irregular, but I think when Sir, we restart, when, sir, when we talk, um, I always I always suggest him that please do homework, please give more time to understand what's taught. But sir, he said to me, okay, but I don't know why he is not working on it, sir. Apurva, I think he focused on only money. You know that? Faizan knows him. Faizan knows him. He has spent time with him. He's talked to him. He's very focused on earning money, no doubt. But Faizan, you see, Yeah. some people are more docile than others. Docile means, you understand? Okay. No, sir. Docile means someone who can be controlled easily. Someone who can be controlled Con- easily. Personality type. Some children are more docile than other children. You can control some children more easily. You can tell them, beta, sit and study, and they will sit and study. My daughter, she is very docile. Okay. Sometimes I don't like that about her. I'm also that type of person, sir. you, I am you also are, that you are, type of. you Yes, are, you sir. are a football. I know that 100%. This is my job. I observe personality types. Okay. Ravi is not docile at all. Okay. Yes, sir. I can When we talk about these things, he stopped talking to me. see. He's got a strong personality. He's got a very strong personality. A strong And personality मतलब ये नहीं कि तगड़ा शरीर. Strong personality yes, means sir. जो अपना दिमाग बैकअप कर ले वैसे ही रहे. Strong headed. And so I don't know what's going wrong with them. So I always suggested him that, but nowadays I don't say anything about class and all. Let Good, it go. good Apurva. That never, okay. I I know him because I've talked to your future husband, Rajneesh Anand, and Anand told me Yes, a lot of things about him. So I understood his personality, and I don't pressurize him a lot. मेरा yes, काम sir. देखो मैं एक बात बताता हूँ.
ठीक है, कुछ टीचर्स ना बहुत ईगो रखते हैं कि अरे ये स्टूडेंट मेरे हिसाब से चलेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे मेरे हिसाब से मत चलो, ठीक है, मत चलो, लेकिन तुम जैसे चलते हम तुम्हारी मदद कर देते हैं वैसे ही मैं। आप सबको पता यस है फैजान हाउ रवि वाज एट इंग्लिश एंड यस यस वेयर ही इज नाउ। तो ये Sometimes, मेरी sir, फ्लेक्सिबिलिटी है पर्सनालिटी की कि रवि मेरे से सीख पाया। अगर मेरे भैया होते, मैं साफ बोलता हूँ, उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना। वो बात करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं मेरे हिसाब से तुम चलोगे, हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके पास पर्सनल नॉलेज है, बात है, ठीक है। मैं उनको गलत नहीं बोल रहा कहीं से भी, मैं कह रहा हूँ कि उनका ये पर्सनैलिटी, वो अब कहते हैं मेरे हिसाब से तुम चलो रिजल्ट आएगा। लेकिन मुझे पता है कुछ स्टूडेंट टूट जाते हैं अगर उनको मोड़ने की कोशिश करिए तो, ठीक है। मतलब ऐसा कई बार हुआ है मेरे साथ पास्ट में कि कुछ स्टूडेंट क्लास से निकल गए क्योंकि मैंने उनको प्रेशराइज किया कुछ खास। तो मैंने सोचा दैट दे लेफ्ट द क्लास, तो मैं तो फेल कर गया ना, कि उनको सिखा नहीं पाया। जब वो क्लास में ही नहीं तो सिखा कैसे रहा हूं मैं इनको, बात समझो। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर एक जिद्दी स्टूडेंट के सामने कह देता हूँ जैसे तुम्हारी मर्जी, नहीं। मैं जो जेन्युइन होते हैं, एक को तो इतना बैंड बजाया मैंने, कहा निकलो क्लास से, भागो भागो भागो। क्यों? आप देखा ही इसकी नहीं करते। Very word. You can't copy other people's personality in my class. You have to be genuine, you know. You have to show me who you are. If you are who you are, then I will definitely find a way to help you. But if you यस try and try and you know uh, copy somebody else's personality, fake it in my class, I'm going to be unhappy with you. Whoever you are, the way you are, it doesn't matter. I know so many different kinds of personalities. I've worked with them all, but you need to be genuine. आपको बुरा लगता है कोई बात, तो महसूस कराओ कि मुझे बुरा लग रहा है। आपको कोई बात सुन के खुशी होती है, मुझे महसूस कराओ कि आपको खुशी हो रही है। गिव मी योर जेन्युइन फीलिंग्स, जेन्युइन फीडबैक, then I'll be able यस to help you better. So with Ravi, I जैसे noticed what was needed and I जैसे helped him. रवि Hmm. जैसे रवि को जब आप डांटते हो ना, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, उनको जब आप डांटते हो तो आप पूछते हो बताओ तुमने ऐसा किया कि नहीं किया, तो वो कम से कम माइक ऑन करके बोलते हैं जी सर, हाँ सर, नो सर। बट रवि तो ऐसा करता है, क्लास ही में नहीं sir, रहता है, लगता वो है बोलता है बोलता ही सर, मुझे लगता है ना कि वो बहुत टेढ़ा है, मतलब उसको बहुत। समझ बहुत डिफिकल्ट है। सर बोलते हैं बताओ, बोलो तो टेढ़ा बोलते टेढ़ा बोलते है। फिर भी नहीं बोलता है। तो आपकी शादी रजनीश से हो रही, नहीं तो मैं बोलता कि बोलिए टेढ़ा है लेकिन मेरा है। नहीं सर, ही इज वेरी मैच्योर्ड पर्सन सर। ये जो वर्ड यूज किया ना टेढ़ा, ये एक नेगेटिव एटीट्यूड का वर्ड है जो सोसाइटी आपको सिखाती है। मैं अपने स्टूडेंट को टेढ़ा नहीं बोलता, आप समझ रहे हो। मैं इंसानों को बोल नो, सकता हूँ टेढ़ा, स्टूडेंट को नहीं। इसलिए वजह नो सर। बताता हूँ, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। क्योंकि जब आप किसी को टेढ़ा बोलते हैं तो आपके दिमाग में दूसरा फीलिंग आता है उसके लिए। मैं मानता हूं कि पर्सनालिटी स्ट्रांग होती है, कुछ लोग स्ट्रांग हेडेड होते हैं, जैसे मैंने बताया। माई ओनली आई पर्पज टू बी इन रिसीव द दैट क्लास वे इज सर। टू हेल्प पीपल, चाहे उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबल होना पड़े, मैं होता हूँ, ठीक है। तुम्हें कुछ जगहों पे डांट लगी है, अभी पिछले कुछ दिनों में गणपत, एक दो जगह ज्यादा डांट सुनने को मिली, ठीक है, उसके पहले नहीं मिल रही थी। उसका रिजल्ट क्या हुआ है, मैं देख रहा हूँ पॉजिटिव रिजल्ट। तो मुझे बस चाहिए अच्छा रिजल्ट। अगर मैं वो डांट के ले पाऊं तो डांट के, ही इज प्यार से ले पाऊं वेरी तो प्यार से। हम्म। Sir, he is very good-hearted person. Ravi is a very good-hearted person, but his personality is अच्छा ठीक है sometime अपूर्वा, इट्स like ऑल राइट, weird. इट्स ऑल राइट। Ravi is not the point, the main topic here. The main point here is that the teacher needs to be a little flexible with his students. In an inclusive class, you have to study these things, by the way. अगर आप B.Ed कोर्स करोगे ना तो ये सब चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। What is an inclusive class? How a teacher needs to be open to different strategies for different students. All students do not work in the same way, and their strengths and weaknesses are different. But as a teacher, you are supposed to help them all. So you need to have multiple, diverse strategies for different students. So yes, docile. Okay, my Sir, daughter is docile. Hmm. sometime when I talk to him, he is very good and understand what I am explaining to him. But sometime he only listen to me. He didn't reply anything, sir.
This is the his personality. I told you na, when sir asks any एक question बात when बताओ, he एक बात बताओ, एक बात बताओ, कोई स्टूडेंट अगर बहुत डसाइल होगा तो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि जो डसाइल होगा वो Yes, तो टीचर की बात मानेगा, टीचर की बात मानेगा तो पढ़ने बैठेगा ही, तो वो शुरू से ही अच्छा होगा ना पढ़ाई में। yes, हाँ, sir. I तो नहीं understand ना your होगी point, पढ़ाई sir. उसकी, तो इसी वजह से तो ऐसा है, ऐसा है इसलिए तो ऐसा है। मैं ऐसा इसलिए हूं कि मैं ऐसा था, मतलब बात समझिए, मैं क्या हूं, वो कैसा पर्सनैलिटी मेरा, उससे बनाओ ना, अचानक से तो पैदा नहीं हुआ ऐसा ना। तो रवि भी स्ट्रांग हेडेड रहा होगा। देखो अच्छे टीचर्स मिलते हैं तो उसको बचपन में ही हेल्प कर देते हैं। मैं आपको फिर से वही एग्जांपल दूंगा। आई गेव यू 2 days ago, आई थिंक। देयर इज अ बॉय इन माय क्लास, फर्स्ट डे ही इज 7 years old, okay, and I scold him and he looks at me like this। रवि 2.0 था वो, ठीक है, ऐसे देख रहा है वो। तो क्या हुआ, ही इज जस्ट 7 years old ना। तो आई नो हाउ आई कैन हेल्प हिम, ही इज डूइंग ग्रेट। लेकिन अगर वही मैंने उस दिन तड़ाक 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 लगा दिया होता उसको कि ऐसे देखेगा, रवि को पक्का पड़ा होगा बचपन में टीचर से, ठीक है, क्योंकि सारे टीचर्स ना क्वालिफाइड होते हैं और ना उतना पेशेंस रखते हैं। क्वालिफाइड होना मतलब टू हैव द एबिलिटी। डॉक्टर अच्छा वो होता है जिसने पढ़ाई करी होती है डॉक्टरी। झोला छाप रहोगे तो गड़बड़ होगा, सारे पेशेंट को एक ही इंजेक्शन लगाते चलोगे आप, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट इन अ पेशेंट। तो क्वालिफिकेशन मैटर्स। I really enjoy, this is why I say I feel very proud of myself as a teacher कि मैं जिस तरह से काम करता हूँ, जिस तरीके से स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करता हूँ और उनको इंडिविजुअल फीडबैक देता हूँ। सबको एक लाइन में, मेहनत करो जी, हाँ जी मेहनत करो जी, क्या हो जाएगा इससे? यू नीड इंडिविजुअल फीडबैक, इफेक्टिव फीडबैक कहते हैं इसको, जो सिर्फ आपके बारे में है, सिर्फ आपके बारे में, सिर्फ अपूर्वा के बारे में, सिर्फ फैजान के बारे में। क्योंकि वो फैजान इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अपूर्वा इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, you are different from the rest of the student as an individual, right? So effective feedback, ये सब terms है जो मैं बोले जा रहा हूँ ना। effective feedback term सर्च करना, बीएड कोर्स इफेक्टिव फीडबैक, पता चल जाएगा कि क्या होता है। जब मैंने देखा ना कोर्स को रैप में, मैंने कहा यार ये सब चीजें तो मैं क्लास में ऐसे ही करता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स, एक मेरा स्टूडेंट्स है राजीव, उसने बीएड करा है। ही ऑलवेज टेल्स मी, सर आप जो जो करते हैं ना सर, ये सब ऐसे है, ऐसे हम लोग को पढ़ाया जाता है करने। मैंने कहा अनुभव भी एक चीज होती है। आई हैवंट डन बीएड कोर्स, राइट, लेकिन वो जो मेरे साथ जो होता है, मैंने जो ऑब्जर्व किया पिछले 16 years में, कोर्स कितने साल का होता है बेटा, 2 या 3 साल, एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 16 years with my eyes closed। आई हैव नॉट बीन ऑब्जर्विंग थिंग्स। तो जिसने कोर्स बनाया होगा कौन होगा? जिसने कोर्स कभी नहीं किया होगा वही ना। सोचो खाली इतना ही, जिसने बीएड और कोर्स बनाया है, पहली दफा जिसने बीएड कोर्स बनाया, उसने बीएड कोर्स किया होगा। तो कैसे कोर्स बनाया होगा? ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस, दे आर योर टीचर्स, ओके। योर रियल टीचर्स इन लाइफ आर योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर एक्सपीरियंसेस, दे आर योर रियल टीचर्स। सो नेवर स्टॉप सर ऑब्जर्विंग, 10th नेवर में था स्टॉप ना, एक्सपीरियंसेस। when यस I फैजान। was in 10th matriculation, there was a one teacher who is taught us math, and he knows very well the chapter and page number, and he always came to class and put all the solution on the board, and he said copy it fast, copy it fast, okay. And whenever we ask any question, he just said, sir, the answer is itna, the answer is itna. And I think, sir, I observe you are not bored। अ, अ, मतलब सर मैं बोल रहा हूँ सर, आप जो भी पढ़ाते हो ना, वो आप हर क्लास में एक चीज ही पढ़ाते हो, लेकिन लगता है कि आप पहली बार पढ़ा रहे हो। लेकिन बहुत सारे टीचर का ऐसा लगता है ना कि वो पढ़ा पढ़ा के बोर हो गए हैं।
तो वो फिर ना उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, वो ज्यादा नहीं करेंगे, बोले अरे क्या यार इतना इजी बात तो है। बोलता है लड़का, ये लड़का क्या बात बोलता है यार, ये क्या बात बोलता है यार, गौर करो क्या बोल गया। बोलता है कि आप एक ही चीज पढ़ा रहे हो, लेकिन नहीं लगता है कि आप पहला दूसरी बार पढ़ा रहे हो, लगता है पहली बार पढ़ा रहे हो इस कोर्स को हर एक बैच में। बात समझ में आ रही है? और ये जो बात इसने कही ना, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। आप 2 क्लास में बैठोगे ना, आपको नहीं लगेगा कि आप वही क्लास कर रहे हो, वही कोर्स कर रहे हो। क्लास अलग हो जाता है, स्टूडेंट्स बदल जाते हैं, समहाउ थिंग्स चेंज, एंड दिस इज व्हाई इट इज हाउ इट इज। ये बहुत बड़ी बात है, यू नो। और इस वजह से हो पाती है बिकॉज आई थरली एंजॉय बीइंग विद यू गाइस। आप लोगों के साथ रहने में मजा आता है, इसलिए। The way आपको the way you जब teach, क्लास में था ना, nobody मुझे like मैथ that, नहीं, sir. हेलो अपूर्वा वेट, जब 6 क्लास में था ना सर मैं, तो मुझे ना मैथ नहीं आता था, तो मैंने ना एक सीनियर से ना मैथ कॉपी लिया था। आप विश्वास करोगे सर, हर एक टॉपिक ठीक है एक एग्जैक्ट सेम रहता था, और मैं बस उसको कॉपी करता था और जाके सर को दिखलाता था। सोचिए, वो जो पढ़ाए थे पिछले साल ना, सेम वही चीज कॉपी, मैं सिर्फ कॉपी करता था और जाके, मुझे क्योंकि समझ ही में नहीं आता था कुछ, तो मैं कॉपी करता था जाके दिखलाता था, और मेरे को वेरी गुड मिलता था, क्योंकि वो जो सर वैसे थे ना, वो exact वही बातें, वही चीज, वही एग्जाम्पल, वही क्वेश्चन के वही एग्जाम्पल्स, मतलब मेरे को डिफिकल्ट ही नहीं होता था कि अरे यार ये चैप्टर तो ठीक है बट एग्जाम्पल तो सर इस बार दूसरा पढ़ाए है। नहीं, सारा चीज सेम पढ़ाते थे, वो एकदम रट लिए थे ऐसा। वही कॉपी दूसरे साल भी, वही कॉपी तीसरे साल भी आप कॉपी कर सकते हो, ऐसा आंसर शीट। I wouldn't like to teach that way. I wouldn't like to teach that way for sure. I wouldn't like to teach that way. However, तो I इस would like to just say कि वैसे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए कर्स है, सारे स्टूडेंट्स के लिए, जितने उस स्कूल में आ रहे हैं ना, सब के लिए वो अभिशाप बने हुए हैं। बिकॉज वो सबका मूड ऑफ हो जाएगा, पढ़ाई से वो इंटरेस्ट खत्म होगा बिकॉज ऑफ हिम, यू नो। ऐसे टीचर्स शुड नॉट बी इन स्कूल। बट एनीवेज, एक क्वेश्चन बिफोर वी एंड अप टुडे। Musharraf has written a sentence. I saw a movie. Can I say the movie worth to watch? Nahi. You can say the movie was worth my time because आपका investment time था और पैसा था, right? So you can say the movie was worth. First of all, Musharraf, you wrote movie worth. Adjective है Musharraf. So how can you write the movie worth? The movie is, the movie was worth, right, Musharraf? Do you notice the problem here? Yes, sir. And what was your Yes, sir. investment? Time and money. Okay. So the movie was worth my money. The movie was worth my time. Absolutely. The movie wasn't worth my time. Time बर्बाद हो गया देख के फिल्म, है ना? The movie wasn't worth my time. Do you understand now, मुशर्रफ? Yes, sir. अच्छा, तो आप लोगों को क्या लगता है, मुशर्रफ पहली दफा में नहीं सीखे थे? इसको इस लिहाज से समझिए कि एक दीवार को तोड़ने के लिए जब आप हथौड़ा मारते हो, तो पहली बार में हो सकता है फर्क ना दिखे दीवार पे, लेकिन फर्क हुआ है, तभी तो दूसरी बार में, तीसरी बार में थोड़ा थोड़ा करके वो गिर जाता है दीवार। तो वैसे ही पहली बार मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने ये सेंटेंस लिखा, द मूवी वर्थ टू वॉच, ठीक है, लेकिन फिर गलती हुई, मैंने सही किया। तो अब हो सकता है एक बार और गलती हो, इट्स नॉट अ बिग डील। लोग इंक्रीमेंटली सीखते हैं, इंक्रीमेंटली मतलब थोड़ा थोड़ा करके। स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है कि नहीं आता है, हाँ आता है, स्विच ऑन हो गया अब आ गया, ऐसे नहीं होता। इंक्रीमेंटल चेंज होते हैं आपके अंदर। इंक्रीमेंटल मतलब बेटा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे नहीं, आई ठीक है, थिंक थोड़ा थोड़ा। ओवर सर। Yes, we are going to be, we are going to meet tomorrow, and we are going a little slow. I hope nobody minds, okay, because this is the last unit, and I know the pre-intermediate won't start until the next month, so I'm going a little slow. Don't mind, okay? Let's meet tomorrow, guys. Okay. Bye-bye. Take care. Send the Bye-bye. recording, sir. I will send the recording. I will certainly send the recording. Bye-bye. Bye-bye. बाय सर।